have our inclination here. If a line is parallel to x-axis, this is x-axis, this is y-axis, correct? If it is parallel to x-axis, what will be the inclination? What is the theta? Theta देखो, theta कितना है? 0 degrees है कि नहीं है? So what is, so if theta is equal to 0 degrees, tan theta is equal to tan 0, that is equal to 0. Tan 0 is 1 to infinity or 0 to infinity? Tan 1 to infinity. नहीं कैसे? 0 to infinity. 0 to infinity. Tan is sin upon cos. Cos is 0 to. अरे tan में लास्ट नंबर 1 infinity होता है. लेकिन फर्स्ट नंबर 0. 0 to infinity. Sin upon cos होता है ना? Sin 0 कितना है? Sin 0 is how much? 0. Sin upon cos is tan. So 0 upon any random thing is going to be 0. So tan 0 कितना होगा? 0. So what is the inclination of a line parallel to x-axis? 0. Inclination of a line parallel to x-axis is always 0. Similarly, if I have a line which is parallel to y-axis, let's see my theta. Theta is how much? 90. So can I say theta is 90? This is when they are parallel to x. And here when it is perpendicular to x भी बोल सकते हैं ना, या फिर parallel to y-axis, perpendicular. So here tan 90 will be how much? Infinity. So can I say the inclination of a line which is perpendicular to x-axis is infinite, is infinity? Did you understand these kind of lines parallel to x-axis? But why is 180 minus theta होता है ना? अरे tan 90 कितना होता है? Infinity. तो उसका स्लोप क्या हुआ? स्लोप क्या होता है किसी लाइन का? tan थीटा. हाँ. तो tan थीटा का वैल्यू मेरे को इंफिनिटी आया तो मैं क्या बोलूँगी? स्लोप क्या है उस लाइन का? Infinity. वही बोले. Slope of that line is infinity. Inclination of that line is how much? 90 degrees. Inclination is in degrees and slope is always a numerical value. Inclination मतलब कितना डिग्री से incline हुआ, कितना डिग्री से tilt हुआ. But slope is how much? Slope is equal. पता है? डर लगता है क्या? अरे भाई, अपना पासपोर्ट ऐसे कर. मुझे भी लगता है. नहीं यार तो किसी को डर नहीं लगता. जो पागल तेरे बाबा की बात कर रही है वो. मेरे सामने 6-4 का इंसान आ जाएगा Did you understand inclination and slope? Did you understand inclination and slope? Now let's take up this concept. So slope we know now two things about slope. Slope is equal to y2 minus y1, that is between 2 points. When I know the coordinates of 2 points, let's say I know the coordinates of this point P and this point Q. Coordinates of P is y1, x1 y1, and coordinates of Q is x2 y2. So what will be the slope of line PQ? y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is when coordinates are known. Correct? Am I right? And when coordinates नहीं पता है, but इसी लाइन का inclination पता है theta. If I know the inclination, can I also find slope? Yes. Tan theta. When inclination theta is known. ये वाला इतना पार्ट लिख लो, ये पूरा लिख लो. समझ में आया क्या बोला मैंने अब तक? कुछ भी डाउट है अब तक? Write it in 2 minutes और take a photo, 2-3 न्यूमेरिकल करके इसको फिनिश कर. फिर इंटरसेप्ट पे आते. फोटो ले लेना. नहीं 2 मिनट.
अपना फोन ले लो. अरे आयशा का फोन है, किसी का भी फोन है. अरे कोई सा भी अरे ऊपर रखा यार. दे देना. आईफोन ले लिया आयशा का. Aisha take. फोटो लो, फिर मैं ये वाला पार्ट दिखाती हूँ आप लोगों को. व्हेन टू लाइंस आर इन्वॉल्व्ड, तो आर्टिस्ट हो. बरी हटना डक डक. नीचे आ रहा है. तो रेडी? साइड से काट दूंगा. वही करना बच्चा है. चलो, done? अब तो बिना बुद्धि के Okay. So now we understood one line. We understood slope. Two methods of finding slope. Now let us see when two lines are inclined in such a way. Inclination of two lines together. अभी देखो मत. देखो. Inclination of parallel lines and inclination of perpendicular lines. Inclination of a line of two lines. Understanding? If two lines are parallel to each other, it doesn't have to be necessarily parallel to the x-axis or y-axis. If two lines PQ and AB are parallel to each other, tell me what will be the relationship between their slopes? 0 0. 0 0. किधर से? Oh sorry my bad. I am tripping. So ये इधर जाएगा. Can I say it will beat the x-axis and y-axis at some point? This will also beat the x-axis and y-axis at some point. Let's say this is x1, this is x2. If these two lines are parallel and this is the transversal through the parallel line, will this angle be equal to this angle? Both the angles will be same by what? Corresponding. What axiom? Corresponding angles. This is called as what formation is this? F formation. F formation मतलब corresponding. Axiom मतलब वही. Axiom मतलब theories का छोटा पेट. Right? What is the understanding? What is the property? Corresponding angles, right? So can I say if two lines are parallel to each other, doesn't matter the relationship with x-axis or y-axis, can I say m1 will be equal to m2 where m is, or m मतलब slope. M मतलब क्या? Can I say this? m1, m2 both are slopes is equal to m. Can I say this about parallel lines? Did I just prove it to you? So if two lines are parallel, both will have the same. So can I say parallel lines have the same slope? Inclination. Same inclination, same slope. Okay. Obvious है. tan 30 और tan 31 का वैल्यूज में फर्क होगा कि नहीं? सेम इंक्लिनेशन होगा, इसीलिए सेम tan का वैल्यू होगा. Understood? Same inclination, same slope. So can I say this condition can be used for many numericals? कि दोनों लाइन पैरेलल है, एक का कुछ वैल्यू दिया है, दूसरे का कुछ वैल्यू दिया है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो वैल्यू आंसर आ जाएगा हमें. Can you understand how this can be used for numericals? Now let's see. Two lines are perpendicular to each other irrespective of their relationship with the x or y axis. So this is the line, let's say, and this is it. There are two lines. This is my first line OB. This is my second line AC. Okay, let's find the inclinations. Let's say the both lines are, first condition was lines are parallel, right? Second condition is lines are perpendicular. So if lines are perpendicular, does it mean this angle is going to be 90 degrees? That is what it means. They meet at 90 degrees. Wherever they meet, it is going to be 90 degrees. This is 90 degrees. Let's say theta is the angle of inclination of line AC. Let's say omega is the angle of inclination of line BO. Now look carefully. What is this? ABC is a triangle. B whatever this point is, sure. B, this and this point is the exterior angle of this triangle or not? Yeah. Can I say from this triangle, 90 theta plus is omega. equal to 90 plus theta, 90 plus omega, why?
Exterior angle Exterior angle ratio. theorem. What do I need but tan theta? Because I am comfortable with tan theta because I know tan theta is slope. Correct? So tan theta is equal to, अभी अच्छा ये वाला आप लोगों को पता नहीं है 90 minus theta का रेशियो. No problem. I will tell you what it is. 11 में पढ़ो. लास्ट में था ना नहीं वो 90 माइनस थीटा का था. 90 प्लस थीटा में माइनस हो जाता है वो. आई देखो tan 90 प्लस थीटा, राइट? tan 90 प्लस नहीं कॉट सॉरी थीटा. साइन Sin- साइन cos एक्स इज theta. इक्वल टू साइन साइन का बात नहीं करें. क्या cos थीटा? कॉट थीटा इक्वल cot नहीं होगा. अभी दोनों को tan कर रही हूँ मैं बस. tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस ओमेगा. इधर तक आ गए. सो tan थीटा आप लोगों को एक्चुअली tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस ए ये सब का वैल्यू हमें पता है ना. tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. cot थीटा होता है कि नहीं? बट 90 प्लस थीटा का भी एक वैल्यू होता है. हाउ टू फाइंड दैट? फॉरगेट अबाउट इट. लेट मी जस्ट ट्राई. इफ यू कैन अंडरस्टैंड अदरवाइज डायरेक्टली याद रखो. कैन आई से दिस इज 180 माइनस 90 प्लस थीटा नहीं प्लस ओमेगा. ठीक है 90 हुआ ना वो. दैट इज इक्वल टू tan 180 माइनस प्लस नहीं प्लस करने का माइनस 90 माइनस ओमेगा माइनस 90 माइनस ओमेगा. लेकिन इससे आप नहीं समझोगे. फॉरगेट इट. दिस डेरिवेशन नो नीड फॉर यू. tan of 90 प्लस any angle is equal to minus of cot. ये आप लोग 11th में पढ़ने वाले हो. प्लस 90 माइनस के आप लोगों ने सीखा है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखा है. सप्लीमेंट्री एंगल्स यू हैवंट लर्न. फॉरगेट अबाउट द डेरिवेशन. नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट. tan थीटा is equal to minus cot omega आएगा. This is a formula. तो tan theta equals to tan 90 plus Yes. omega. So tan theta is equal to minus 1 upon tan omega. Can I say this? Can I say tan theta is equal to minus 1 upon tan omega? So from here, everyone is following what I am saying. This is a direct formula. This is a formula you don't know, but just trust me. You can trust me. It is a formula. So can I say tan theta into tan omega is equal to minus 1? Tan theta into tan omega is equal to minus 1. But what is tan theta? Tan theta is the slope of first line. Tan omega is the slope of second line or not? Slope of second line is equal to minus 1. ये relation समझ में आ गया? The product of the slopes of two perpendicular line is always minus 1. And what is the relation? It is the negative reciprocal of each other. Negative reciprocal होंगे कि नहीं? Reciprocal और minus लग गया है. So perpendicular lines अगर हो, what is the formula? m1 is equal to minus 1 upon m2 or product m1 m2 is equal to minus 1. Whatever you want to do. Did you understand till here? Crystal clear? अभी